Swamandhari, a soul that shines without a status. जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा. The extent to which someone is a Swamandhari, he will be the one to give respect to all to that extent. विशेष लक्षण क्या बताया स्वमानधारी का? What was said to be the special characteristic of a Swamandhari? Student, he will give respect to everyone. जितना स्वमानधारी उतना ही निर्माण. The extent to which someone is a Swamandhari, he will be modest to that extent. कैसा चित्त? What kind of heart will he have? निर्माण चित्त. He will have a modest heart. और सर्व का स्नेही होगा. And he will be loved by everyone. जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले होंगे सब उसे स्नेह करने वाले होंगे. Whoever comes in contact and connection with him, all of them will love him. स्वमानधारी की निशानी है The sign of a Swamandhari is बाप का प्यारा और साथ में सर्व का प्यारा. that he will be dear to the father as well as dear to everyone. लक्षण क्या बताया? What characteristic was mentioned? लक्षण क्या बताया विशेष? What special characteristic was mentioned? हैं? सर्व को सम्मान देने वाला. He will be the one who respects everyone. दूसरों को सम्मान कौन देगा? Who will give respect to others? जो खुद निर्माण होगा. The one who himself will be modest. अपने मान मर्तबे की चिंता करने वाला नहीं होगा. He will not be the one who cares for his own honor and position. और निशानियां क्या बताई? And what are the signs that were mentioned? बाप का प्यारा और सर्व का प्यारा. He is dear to the father as well as everyone. हद का प्यारा नहीं, He is not dear in a limited sense. बेहद का प्यारा. हैं? ये क्या होता है? He is dear in an unlimited sense. What is this? हद का प्यारा और बेहद का प्यारा क्या होता है? What does dear in a limited sense and dear in an unlimited sense mean? हद का प्यारा होता है अपने परिवार के भांतियों का प्यारा हो. Dear in a limited sense means the one who is dear to his family members. अपने गांव वालों का प्यारा हो. Dear to the people of his village. अपने डिस्ट्रिक्ट वालों का प्यारा हो. Dear to the people of his district. एमएलए होगा, एमपी होगा तो क्या कहेंगे? If someone is a MLA, member of Legislative Assembly, MP, member of the Parliament, what will be said about him? उसके डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उसको मानते हैं, प्यार करते हैं. The people of his district accept him. They love him. वो तो हद के हो गए. They are the ones who love him in a limited sense. कैसा प्यारा? बेहद का प्यारा. बेहद माना He is dear in what way? Dear in an unlimited sense. Unlimited means? Student, the entire world. Yes. जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, सारी दुनिया की बीज चुनी हुई. All the seed form souls, the chosen seeds of the entire world, उनमें सारा विश्व समाया हुआ है. the entire world is merged in them. उन सब का प्यारा. He is dear to all of them. तो हद का नहीं, बेहद का प्यारा. So, he is not dear in a limited sense. He is dear in an unlimited sense. बीज रूप आत्माओं का प्यारा होगा तो सारी दुनिया का भी जरूर प्यारा होगा. If he is dear to the seed form souls, he will surely be dear to the entire world too. जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, Just as the father is dear to everyone. चाहे 1 मास का बच्चा है, Whether it is a 1-month-old child चाहे आदि रतन भी है, or even a jewel of the beginning, Adi Ratan. क्या? What?
लेकिन हर एक बच्चा मानता है However, every child thinks, मैं बाबा का और बाबा मेरा है। I belong to Baba and Baba belongs to me. तो ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की। So, this is the sign of being dear to everyone, श्रेष्ठ स्वमान की, of the elevated Swaman, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। because such children become the ones who follow the Father.